Now we are going to do the practical example with the GST in a TallyPrime, right? So if you look at the example, the first they given for us the opening balance, right? So then they given for us the transaction during the accounting period. There are 4 transactions happen during the accounting period. The first one is the good purchase. It is a local supplier. It means that within a state a transaction. The second one is the good purchase interstate transaction, right? It means that IGST. The third is good sold. The good sold, the first transaction is local customer. It means that within a state transaction. And then fourth one is good sold, but it is the interstate transaction. It means that IGST customers, right? So now we are going to look at how can we do this example. Before going to do the example, I'm going to read the example. Prepare the accounts in the books of Sarah and Co. for the following year 2019 to 2020. Then a particular debit and credit: capital 975,000, case 420, machinery 75,000, Indian bank 408,000. So transaction happened during the accounting period. April 1st, good purchase on credit from Lala Traders, local suppliers, Tamil Nadu, for the following. Reference number 548, 30 days. There are 2 type of stock. The first stock group is computer. This is GST rate 18% and HSN code 8471. The second stock group is digital camera, GST rate 20% and HSN code 8525. Under the computer stock group, there are 3 stock items: i3 computer, i5 computer, i7 computer. Under the digital camera stock group, there are 2 stock items: Canon camera, Sony camera, right? So the transaction they provided for us, the details available here. Then unit quantity, unit price, the value, tax rate and tax amount, right? And may we purchase Billa Traders, IGST supplier. It means that interstate transaction. We are Tamil Nadu and we purchase from the Kerala. So the reference number available, then 45 days. The computer GST rate 18%, HSN code 8471. Likewise, the details available, right? The details available here. And the value, the unit quantity, unit price, value, tax rate and tax amount. Likewise, this is the last 2 are credit sold, right? So the first one is local customer, Tamil Nadu, and the details available here. And second, July 1st sold credit Hama Trader, IGST customer. It means that interstate transaction. We are living in Tamil Nadu and we sell the goods to Delhi, and reference number and details also available here. So now we are going to record this transaction, and the process of GST set up with the transaction, enable the GST into TallyPrime. The second stock creation with the GST rate. The third process is create the CGST, SGST and IGST, right? So then now we have to create the company and we have to enter the opening balance first. So if I want to enter the opening balance, I need to create the company and need to enter the opening balance. So I'm going to open the TallyPrime. Continue in educational mode. The sample one company, it's open. I'm going to close the company. I'm going to shut the company. So I'm going to click the company and I'm going to choose the shut company. The sample one company I'm going to shut and I'm going to press yes. So now I'm going to create the company. The company name is, you can see here, Sarah Co Private Limited. So I'm going to type the company name, Sarah Co. And state is, what is our state? Our state is Tamil Nadu. You can see Tamil Nadu, right? I'm going to choose the Tamil Nadu. And country India and other things are same. The date of starting is 1st April 2019, right?
and currency symbol India, everything is same. I'm going to be accept, right? So the next, so you can enable the GST here. Now I'm going to be enable the GST, not here. I'm going to be save this setting, Control plus A. The setting will be saved in your computer, and Sarah computer, it's created successfully, right? So you can see here current period 1st April 2019 to 31st March 2020, and Monday 1st April 2019, and company name is Sarah Co. And now I'm going to be enter the opening balance. I'm going to be enter the opening balance, capital 975,000. So if I want to enter the opening balance, I'm going to be go to the create button, and I'm going to be click the ledger. So the first one is capital. It is coming under the capital account, and our state is Tamil Nadu, and register customer. I'm going to be enter 975,000. I'm going to be served it. The next one is cash 420,000. Cash is default account into TallyPrime. So I'm going to be press the page up key. You can see the cash come. So I'm going to be enter the amount. Amount is how much? 420,000 and a bit. The next one is machinery 75,000. Machinery coming under the fixed asset. So I'm going to be type the machinery. It's coming under the fixed assets of the organization. So I'm going to be enter the amount. How much the amount? 75,000. The next one is Indian Bank. The company have the balance in Indian Bank 480. I'm going to create Indian Bank. It is coming under the bank account, and I'm going to be put the amount. How much that one? 480,000. Right. So I'm going to be serve this one. If I serve, you can see the debit and credits are equal, 975,000, 975,000. Now we are going to be back and come back to the gateway of Tally, and you can see now I'm going to be look at the process of GST. You can see here the process of GST setup with the transaction. First we have to enable GST into TallyPrime. So if I want to be enable the GST into TallyPrime, it's a very simple. If I press the F11 into the keyboard, the company features will come. You can see here enable the good and service tax. So I'm going to be enter yes. If I enter yes, the window will become. You need to be enter the details. So I'm going to be type yes. So if I type is the GST details, we need to be entered. The state is our state is Tamil Nadu. नहीं अभी तक दूसरे कपड़े पहनने हैं ना. अब मंदिर से आके खा के फिर चलोगे या फिर पहले दिन का काम करके आओगे फिर खाओगे? नहीं डायरेक्टली चलेंगे. तो फिर आके तो खाओगे मंदिर से आके. वो ब्रेकफास्ट करके फिर बैंक चलना, बैंक से फिर वहीं को निकल जाएंगे. हाँ तो चीला पे आके खाओगे. हाँ तो फिर अभी पहन लो फिर कौन से कपड़े पहनूं फिर? लोअर ही डाल लेते हैं. ये पहनूं. ये लोअर मोटा है, इसके अंदर वो भी पहनूंगा. अभी पजामा इसके अंदर आ जाएगा. हाँ इसके अंदर तो आ जाएगा. नहीं इसके उसमें भी आ जाएगा. अरे कभी कोई कहाँ है वो निकल. इसमें तो आ जाएगा. और कोई मोटा सा स्वेटर पहन के देता है ना, मोटा सा. अच्छा जैकेट दावा ये तो मैं चेंज करना है.
ठीक तो है, पहले मंदिर उसके बाद आके ब्रेकफास्ट फिर अपनी चीज़ें मैं घर हाँ तो बनवा दूँगी। बैंक का तो पर जैसे मेरा फास्ट है, आप प्याज डलवाओगे, तो बिन प्याज के प्याज करना काटनी पड़ेगी मुझे, वो प्याज हटा प्याज दे। की टेस्टी ना लगेगा। हो जाता टमाटर शिमला मिर्च डाल देना बस, हाँ शिमला मिर्च भी डाल दूँगी। धनिया टमाटर शिमला मिर्च बस। अच्छा धनिया तो आप ले लो। हाँ मिर्च भी है वो भी डाल देना। प्याज तो ले लेना है, मेरा हाँ। फास्ट है तो काटूँगी प्याज। उससे या मन हो तो मैं बना दूँगी, कोई दिक्कत नहीं। ना छोड़ देना। अरे पहले तो रोटी साफ करूँ, रोटी कितना करी अभी मैंने। ऐसे सही जाना है। सही। और क्या ठंडे के लिए पहले रोटी साफ करो। आता हूँ मैं जरा वो इसके अंदर कुछ और पहनो, मोटा सा पकाएगी। आ जाएगी ये है तो ये तो इतना पतला सा है। तो अभी इसको पहनूंगा तो बहुत मोटी जैकेट है, अभी देखना भी काम हो जाएगा। मैं जरा वो लिया हूँ पहले नीचे का लोअर, गरम लोअर जो जॉन वाली, और गले में वो डाल लूँगा ना। गले तो ये यहाँ तक ही है। अच्छा तो फिर कल तो यूज़ हुई थी। चलो तुम करो काम, मैं इतना लिया हूँ, लोअर लिया हूँ अपना नीचे वाला। मंदिर में ना पहनते, मना कर देते। 2-3 आंटी कह रही थी।
किसी नहीं पहन सब में फिट हो जाती है। सही है। मोटा सा कुछ पहन लेते हैं आज, फिर उसके ऊपर तक आज तो मैं उठा 5:30 बजे। सॉक्स मत पहनना भी। हाँ अभी नहीं, आके पहनूंगा। ये वीडियो मैंने सब उससे बनाई है, AI टूल से बनाई है सारी। तो उनको रिकॉर्डिंग बना तो दी, बस रिकॉर्डिंग रहेगी उनकी। उसके कपड़े भी रखे हैं ना? दीदी की कॉल आई थी। हाँ किसके? आपके फोन पे। अच्छा मैं कल 2:30 बजे तक करूँगी, मैं देख लूँगी। उसके कपड़े पीयू पे। सो रही है मम्मी। ठंडी तो नहीं हो रही है। बढ़िया है, गर्मा गर्मा गर्मा। क्या सही मिलेगा? कर लेगा, नहीं करेगा तो फिर फिटिंग, या तो फिटिंग या फिर क्या करें, फिर या तो दीपक भैया को दे देना। अब एक्सेल तो मेरे को तो आएगा नहीं, एक्सेल उनको तो आ सकता है, फ्री साइज है एक्सेल तो। लोटे उठा लेना वहाँ से, मैंने भर दिए, मैंने साफ कर दिए लोटे। जल्दी चलो बराबर। सॉरी, अभी तो एक वो निकालना दीपक, इसमें से कहाँ रखे हैं आपके दीपक वो मिट्टी वाले। ये लोशन ले लो ना। ना लोशन पे हाथ अजीब से लोशन ऐसा लगता है
और क्या कह रही थी मैं, जो हम चुंदरी लेकर आए थे, बच रही थी ना वो चुंदरी जो कन्या खिलाई थी, है, तो बक्से में से वो चुंदरी निकाल ली। आऊँ मैं? आऊँ? आ रही। मैं सोच रही हम जाएंगे, ये दीपक जल रहा है, वैसे तो सिलेंडर हो हैं, क्या डर ही लगता है मुझे। हाँ बना रही हूँ। आपका सामान तो बहुत से ये
अच्छा एक मिनट ये बताना मेरा भी ये बता क्या बात है, बढ़िया, सही है पूरी बात। खुले पैसे ले लेना बेल पत्र ले लिए मैंने। आज क्या है? आज दिन कौन सा? शुक्रवार, शायद नहीं होगी आज, मंडे आती है शायद, तो देख लेंगे। And register type is regular. Regular mean registered, right? So the access of the territory no GST applicable from 1st April 2019, and we have to enter the registration number here. The registration number I am going to be put as a sample 29. So I just enter the sample registration number, GST registration number, and the periodicity is a month base, we need to be paid. So then I am going to be accept everything. Here I am not going to be alter the GST rate, because we know well that we can set the GST rate in three ways. The first way, company wise based GST rate we can implement. The second, stock group wise we can GST rate implement. The third is stock items based GST rate we can implement. In this example, I am going to be do stock group wise GST rate implemented. This is why I am not going to be enable here. So I just enter and I am going to be serve this one. That's it. And I am going to be save this setting Control plus A. Alright. So successfully the GST enable in a TallyPrime. Right.